जय भीम भाई। जय भीम, नमो बुद्धाय। बचा के रखो मटर आ रहा हूँ। स्वागत है आपका, आओ। खाना पीना हुआ कि नहीं अभी? खाना हुआ? अभी बन रहा है। क्या बन रहा है? खाने में क्या बन रहा है? क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम दीदी। लाइट क्यों बंद कर दिए यार? उसको बंद कर दो, इस कमरे को जला दो। जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम दीदी। जय भीम, नमो बुद्धाय सिस्टर। भाई आप हो क्या? मुझे गुस्सा आ रहा है आज। क्यों भाई? गुस्सा क्यों आ रहा? किस बात का बताओ। सूरन की सब्जी अच्छी बात है भाई। सूरन की सब्जी मैं भी खाती हूँ। क्यों भाई? मैं नहीं बोलूंगा आपसे दीदी। क्यों भारती भाई, मैंने ऐसे क्या कर दिया बताओ? ऐसा क्या किया बताओ? कौन से गली से आ रहा है गुस्सा भाई? बोलो भाई। दीदी भाई को खाना दे तो गुस्सा नहीं आएगा। खाना बिल्कुल मिल जाएगा बहन। खाना भी वैसे पड़ा है, खाना बहुत पड़ा है। गुस्सा क्यों आ रहा भाई बता। थैंक यू सो मच। गुस्सा क्यों आ रहा पहले बताओ। हम लोग क्या देखते हैं, हम भी लोग भी कहते हैं दीदी। किस बात का गुस्सा आ रहा भारती भाई बताना मुझे। सूरन की सब्जी। सूरन की सब्जी सोनू भैया के घर पे बन रही है बहन। गुस्सा किस बात का? कहाँ गए भारती भाई बोलो। खाते लिखी थी दीदी। अच्छा सॉरी सिस्टर। बोलो भारती भाई, कहाँ गए आप? गुस्सा किस बात का? जल्दी बोलो। लेकिन मैं खिलाऊंगा नहीं। आपको खिलाने की आवश्यकता नहीं है, हम खुद लेके खा लेंगे भाई।
आपको खिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना आपसे मांगेंगे, भाभी हमारी है ना, हम उनसे मांग के खा लेंगे। दूसरे आईडी से आओ पूजा। सौरभ कुमार, जय भीम भैया। सौरभ भैया जय भीम, नमो बुद्धाय, मोस्ट वेलकम आपका हमारी लाइन में। कैसे हो आप? क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम सोनू भैया। मेरे और भाई से लड़ाई हो गई है दीदी। किस बात को लेकर के अंजू सिस्टर? आप कैसे हैं सोनू भैया? भारती भाई पूछ रहे हैं। सौरभ भाई, सौरभ नहीं लिखा है, सौरव लिखा है। मैं जबरदस्ती खाऊंगी सोनू भैया जी। ठीक है, खाना खा लिया रे सौरभ भाई। हाँ बोलो। भारती भाई, चाहे दोस्त हो चाहे कुछ, रे की भाषा नहीं बोलते भाई। आपस में आप लोग क्या हुआ अलग चलेगा, बट ऐसा भाषा नहीं यूज करते। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम सौरभ भाई। मैं ठीक हूँ भाई, आप बताओ। देखा डेली अपन लक्षण सौरभ। मैं नहीं समझ पाई भाई, शुक्रिया लो ब्रदर। सौरभ भैया बोल रहे हैं मैं भी ठीक हूँ सोनू भैया। जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम सोनू भैया जी। भाई आप सिस्टर और ब्रदर में तो कंफ्यूजन सी हो जाती है, हम लोग तो समझ ही नहीं पाते। रे वाला शब्द कृपया करके ना लिखो। बिल्कुल बिल्कुल सोनू भैया, ये चीज मैं भी बोला है ताकि दूसरों पे ना जाए असर। आपस में ये चलती है, आप लोग आपस में कर सकते हो, बट यहाँ एक दूसरे का रिस्पेक्ट देना अच्छा है। अच्छा ओके भैया, थैंक्स सौरभ भाई। बिल्कुल भाई बिल्कुल। सभी भाई बहनों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ भैया, आप हमारी लाइफ में पहली बार आए हैं, बताइए आपका कैसे स्वागत करें। जय भीम सभी भाई बहनों को सोनू भैया की तरफ से। छोटा इमोजी नहीं भेजना चाहिए सौरभ भाई, भारती भाई बोल रहे हैं। सभी यूट्यूब फैमिली को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम। उसका जरूरत नहीं है जी। किसका जरूरत भाई बताओ। खाना खा लिया है सौरभ भाई, भारती भाई पूछ रहे हैं। हम जी। ख्याल का। अच्छा भैया, हम ठीक है। ओके भैया, ठीक ही रहना चाहिए। ये कौन सी भाषा है सौरभ? भारती भाई बोल रहे हैं। भारती भाई आपने बोला नहीं, मेरी बहन है यार।
भारती भाई बताओ। कॉलेज में मिले। भारती भाई बताओ कौन सी बात पे आप बोल रहे थे कि मैं गुस्सा हूँ नहीं बोलूंगा दीदी, ऐसी क्या बात थी बताना भाई। गुड नाइट भाई, गुड नाइट धमरात्रि। मैं जीवन में हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम सौरभ भैया जी। धमरात्रि सौरभ भाई। भारती भाई की तरफ से कहाँ जा रहे हो आप सौरभ भैया जी? जाने दो सिस्टर, टाइम ज्यादा हो गया है, सोने दो भैया को। पढ़ाई लिखाई का भी काम होता है। टेक केयर और सेल्फ सौरभ भाई। भारती भाई की तरफ से चला गया सौरभ। जाने दो भैया। चला गया पूजा। आप भी रेस्ट कर लो भाई, मैं ही बोला था कि 5 मिनट के लिए आना सिर्फ। ओके भाई, थैंक्स। अच्छा भाई, 5 मिनट पूरा करके चला गया। टाइम फिक्स थी ना, आपने पहले दे दिया था ना। खाना खा लिए भारती भाई, बोलो। खाना खाए? मैं बोलूंगा ही नहीं दीदी, ऐसा क्या किया भाई बताओ। जुबान के पक्के इंसान थे भाई। बिल्कुल बिल्कुल, पक्के थे तभी तो आए। भारती भाई बताओ क्यों नहीं बोलोगे, ऐसा क्या किया हमने? जब तक आपको याद नहीं आएगी कि मैं किस लिए नहीं बोल रहा हूँ। मुझे याद है,
आपने बोला था जब तक मैं नहीं आऊँगा तब तक लाइव एंड नहीं करना है। मुझे पता है भाई। बट भारती भाई कभी-कभी ऐसी बात जो सामने आती है ना तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाती हूँ। समझे? कितना मैं कोशिश कर लूँ ना, मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है। मैं इसी गुस्सा हो के मान लें आप लोगों को फिर दोबारा लाइव चालू करी। मेरा भी मन नहीं लग रहा था। मैंने सोचा कि मैंने कुछ गलत किया। मैं आया और कमेंट करने वाले थे और लाइव बंद हो गया। क्योंकि मैं उस टाइम लाइव चला ही नहीं पाती, इसलिए बंद करना पड़ा मुझे। अब मुझे बताइए कि कैसा लगा। अच्छा लगा भाई। मुझे भी याद था दीदी। क्या किया जाए सिस्टर, हम लोगों की किस्मत ही ऐसी है। ठीक है दीदी। क्या ठीक है? पहले आप बताओ क्या पूछे हो। अब मुझे बताइए कि कैसा लगा। मतलब अभी का बोल रहे हो कि जब लाइव एंड करी तब का बोल रहे हो, ये बताओ। अभी का जब आप लाइव में अभी आए तब का पूछ रहे हो कि जब लाइव मैंने एंड किया तब का पूछ रहे हो, पहले बताओ। अच्छा लगेगा भाई आप पर। समझी दीदी, ज्यादा परेशान नहीं होना दीदी। हाँ दीदी। अभी का अभी अच्छा लगा भाई आप लोगों से बातें करके, इसीलिए तो मैंने लाइव चालू कर लिया। आपको पता है मैं ज्यादा सोचते हैं तो मेरे माइंड में वही चीजें रहती है, मुझे नींद भी नहीं आएगी शायद, इसलिए। लाइव चालू कर लो सोनू भैया, आप नहीं चलाओगे क्या? सोने जा रहे हो? दीदी की जगह मैं भी रहती तो मैं भी यही करती आपके साथ भाई। फिर ज्यादा टेंशन लेना शुरू कर दे। टेंशन नहीं भारती भाई, टेंशन नहीं होती है। जो चीज खाने खा लो भैया, खा लो खाना, खा के फिर लाइव अपना चालू कर लो सोनू भैया। भारती भाई अगर हम अपने माँ बाप को जिस दिन भुला दिए तो हम औलादी क्या, पहले ये बताओ। अब माँ बाप जिंदगी में इतना आसान नहीं होता है कि भुला जाओ। याद तो हर पल आती है, पर ऐसी सी बात जब आती है तो और ज्यादा ही आती है। आप तो बेटे हो, आप लोग अपने घर में रह लेते हो चाहे जैसे। हम लोग तो लड़कियां दूसरे के घर जाते हैं, हमारे साथ क्या होता कितना चाहते हैं। एक माँ ही ऐसी होती है कि जो हम दर्द बयां कर सकते हैं, अपने दिल की बातें जो कुछ भी कहना हो कह लेते हैं। बहुत ऐसी चीजें होती हैं भाई जो याद आती हैं। आपको तो मैं घर आके मुआ देता। आप लोग टेंशन बातें मत करो प्लीज। सोचते रहिए दीदी। बात तो राइट है भारती भाई आपकी। बहुत ऐसी बातें होती है भाई। एक छुपा से कहना, एक चीज करके दिखाने में बहुत फर्क हो जाता है।
टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का दीदी। मैं और बाकी चीजों का टेंशन नहीं लेती पूजा सिस्टर, मुझे वैसी कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन ये बात समझ लेना कि अब पछतावा होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। बात राइट है, लेकिन ये उदाहरण हर जगह, हर शब्दों, हर क्वेश्चन का आंसर का जो होता उदाहरण सेम ही नहीं होता भाई। हर एक चीज का अलग अलग हो जाता है। अगर ये कहो एग्जाम्पल हम मैथ, हिंदी और हर एक सब्जेक्ट का एक ही देते हैं तो नहीं है ना। अपने अपने जगह पे हर एक चीज का अलग अलग महत्व होता है। लाइक कर दिए हैं दीदी, थैंक यू सरला दीदी, थैंक यू। ठीक है दीदी, मैं बोल तो दिया, सही कह रही हो आप दीदी। बस समझो आप जैसे भाइयों से खुशी मिलती है आप लोगों से थोड़ा सा बात करके, आप लोग हो तो थोड़ा सा भटक जाते हैं, नहीं तो फिर वो चीजें माइंड से बिल्कुल नहीं जाती। चरण स्पर्श दीदी जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। लाइव में जुड़े सभी सम्मानित भाइयों को जय भीम, नमो बुद्धाय। रवि भैया जी मोस्ट वेलकम आपका, कैसे हो आप? अब मैं ज्यादा आपको टॉर्चर नहीं करूंगी। अरे भाई आप कौन सा टॉर्चर कर रहे हो मुझे बताओ। भारती भाई आप मुझे क्या टॉर्चर कर रहे हो? ऐसा काहे बोल रहे हो? ऐसा काहे बोलते हो भाई? टॉर्चर थोड़ी करते हो आप लोग। ऐसा नहीं बोलते, ऐसा कभी सोचना भी नहीं। कैसे हो रवि भैया जी, सरला दीदी, खाना पीना हुआ आपका? मैं अब लाइव में कुछ समय के लिए आएंगे और हाल चाल पूछ कर चला जाऊंगा दीदी। ऐसा क्यों भाई? क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम सरला दीदी। भारती भाई बोल रहे हैं ठीक हूँ दीदी जी, ओके रवि भैया जी, ठीक ही रहना चाहिए। खाना पीना हुआ आपका? आप कैसी हो सरला दीदी, आपका खाना पीना हो गया सरला दीदी? भारती भाई पूछ रहे हैं। कौन पूछा है आपसे भाई? जय भीम, नमो बुद्धाय। भारती भाई ऐसे नहीं करना किसी के साथ, कोई बोले या ना बोले हम लोग बोलेंगे। हेलो गाइस, सुलुलुलु। मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ दीदी, अपना ख्याल रखना दीदी। पहले बोलो, ऐसा बोले काहे? इजाजत तो मैं तुरंत दूंगी, ऐसी बात क्यों बोले है? मैंने क्या किया है पहले बताओ। भारती भाई रुको, धमरात्रि नहीं, बाय नहीं, पहले बताओ ऐसा क्या बात है? बोलो, जल्दी बोलो। जय भीम सरला दीदी, जय भीम। ऐसी क्या बात है भारती भाई, मैंने ऐसा क्या किया बताओ? जल्दी बोलो, ज्यादा टेंशन ना दो मुझे। दीदी भाई को नींद आ रही है, कोई बात नहीं है, नींद आ रही है सो जाएं भाई, बट ऐसे नहीं सोने जा रहे हैं। ओके ओके सिस्टर, सो जाओ भाई, फिर सो जाओ। जय भीम सरला दीदी, जय भीम। भारती भाई सो जाओ आप। थैंक यू सरला दीदी, सभी लोग सो जाओ, टाइम ओवर हो रहा है।
ओके सिस्टर, आप भी सो जाओ, आप भी रेस्ट कर लो। लाइक डन। थैंक यू रवि भैया, थैंक यू सो मच। खाना पीना हुआ आपका? जय भीम शर्ला दीदी, जय भीम। खाना पीना हो गया रवि भैया जी आपका? गुड नाइट दीदी, मैं लाइक करने आई थी। ओके दीदी, गुड नाइट, बाय बाय। बाय बाय दीदी, बाय बाय, थैंक यू सो मच। भारती भाई गुस्सा नहीं करते हैं, गुस्सा करना भी नहीं चाहिए सिस्टर। बहन बात कभी कभी ऐसी आ जाती है, सामने सोचने वालों से अब जिसके ऊपर पड़ती है उससे बहुत फर्क हो जाता है, समझे? मुझे मालूम है कि भाई नहीं देख पाते हैं बहनों की आंखों में आंसू, पर कितना भी रोको कोई बात आ जाती है जब ना, अपने आप आ जाते हैं बहन। मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं पता नहीं क्यों इतना ज्यादा भावुक इमोशनल हो जाती हूँ कोई बातों पे, मैं रोक नहीं पाती हूँ अपने आंसू। लाठी चलो तू लाठी भाई पर दीदी, अरे नहीं बहन, यहाँ इससे कैसे हो सकता है। गुड नाइट भारती भाई, आपको भी दीदी, आपको भी गुड नाइट। चल रहा दीदी, गुड नाइट, बाय बाय दीदी, बाय बाय, थैंक यू सो मच दिल से आपको। दीदी बिल्कुल आप हमारे जैसे, ऐसे मैं भी करती हूँ। सरला दीदी की भी प्रॉब्लम है, ये भी हो जाते हैं भाव की नहीं दीदी, कभी ऐसा कोई आता है जब बात, तो कितना भी हम सोचे नहीं, पर जब बात आ जाती है किसी की तो हो जाते हैं, सब लोग भावुक हो जाते हैं। लाइक डन, थैंक यू मेरे भैया। मैं कब से पूछ रही हूँ आप खाना खाए कि नहीं खाए, बता नहीं रहे हो रवि भैया। खाना खाए कि नहीं रवि भैया, बताओ। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। नहीं दीदी जी, मन नहीं है, फिर बर्दाश्त नहीं होता है, आंसू नहीं रुकते। सच्ची बात है सरला दीदी। अरे हम कुछ कामों में कहीं बिजी हो जाते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन हमारे दिल से कोई बातें थोड़ी भूल जाती है। मन क्यों नहीं है भैया, रवि भैया मन क्यों नहीं है खाना खाने का, बताओ ना। मन काहे नहीं है भैया, खाना खाने का मन काहे नहीं है? सही कह रही हो आप दीदी, मुझे पता है भाई आप लाइफ में हो, प्लीज कमेंट करो। मूड सही नहीं है दीदी जी, क्या हुआ रवि भैया? क्या हुआ भैया बताओ, रवि भैया। क्या हुआ बताओ आप। अच्छे इंसानों को नहीं भूल पाएंगे दीदी, कुछ नहीं। अच्छे इंसानों को बिल्कुल दीदी नहीं भूल पाएंगे, यहाँ बात थी अपने माँ बाप की।
कोई औलाद अपने माँ-बाप को इतना जल्दी भुला सकता है क्या दीदी बताओ? और रिश्ते इंसान चाहे भूल जाए लेकिन अपनी माँ ऐसी होती है, माँ को भूलना आसान नहीं होता है कि कोई भूल जाए, वो भी बेटियाँ। बेटे कुछ पल के लिए हो जाते हैं पर बेटियों से नहीं होता है। चाहे किसी की हो। कुछ नहीं दीदी, ऐसा क्यों भैया बोल रहे हो? फिर क्यों नहीं खा रहे हो? फिर क्यों नहीं खाने का मन है जब कुछ नहीं है तो? बताओ भैया। मैं तो कभी नहीं रोती हूँ दीदी, बस जहाँ साइड वाली बातें आती है बस मेरी आँख में कुछ पड़ जाता है। अच्छी बात है सिस्टर, बट हम आपकी तरह स्ट्रांग नहीं हैं। कोई हमारी कमजोरी समझे चाहे कुछ भी समझे, हम इतने स्ट्रांग नहीं है सिस्टर। और आँख से पानी निकल जाता है। जो इंसान अपनी फीलिंग को जितना छिपाता है उसका प्यार उतना ही बढ़ता जाता है। खाना खा लो रवि भैया, खाना खा लो आप भी। थोड़ा बहुत कुछ भी खा लो, दवाई भी खाते हो ना आप। इतना भी भाव ना खाए जिंदगी, 5 रुपए के गोले में जान भी खेल रही है।
सही बात है भाई। खाना खा लो रवि भैया। सही कह रही हो आप दीदी। मेरी मम्मी को जब ऑपरेशन हुआ था और मेरी मम्मी बेहोश थी, उस समय मैं बहुत रोई थी। अपनों की याद हमेशा आती सिस्टर। कोई कितना भी कह देता ना भुला जाओ भूल जाओ, आसान नहीं होता है बहन। कैसे भूल जाते हैं लोग। सजा तो बहुत दी है जिंदगी ने, पर कसूर क्या था मेरा ये नहीं बताया। खाना खा लो रवि भैया, प्लीज आप खाना खा लो। आपका भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मैं जानती हूँ। आपका भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है। खाना खा लो आप। थोड़ा बहुत कुछ भी खा के दवाई खा लो। भाई कुछ तो बोलो। रवि भैया खाना खा लो प्लीज। थोड़ा सा खा लो भैया, खाना खा लो। चुपचाप क्या कर रहे हो भाई। सोने दो सिस्टर, भाई को नींद आ रही है। आप भी सो जाओ बहन, ज्यादा देर तक ना जगो। आप भी सो जाओ। दीदी अभी नहीं मन है, कल ड्यूटी गया था, आज वापस आया हूँ ड्यूटी से। क्यों भैया, कल से ड्यूटी में ही थे, रूम पे नहीं आए हैं रवि भैया? कल से आप ड्यूटी पर ही थे? कल से ड्यूटी पर ही था रवि। खाना खा लो, जब आज रूम पे गए हो खाना खा लो, दवाई खा लो, टाइम से सो जाओ। क्यों परेशान हो भैया? खाना खा के दवाई खा के सो जाओ, रेस्ट कर लो।
ठीक है दीदी, मैं भी जा रही हूँ। ओके सिस्टर, अपना ख्याल रखना। आप अपना ख्याल रखना दीदी। ओके सिस्टर, आप भी अपना ख्याल रखना। अपने साथ-साथ मम्मी का भी ख्याल रखना। गुड नाइट दीदी। गुड नाइट सिस्टर, गुड नाइट। बाय-बाय, गुड नाइट, बाय-बाय बहन। खोया हुआ हर सपना, टूटा हुआ हर ख्वाब, जिंदगी ने सिखाया कुछ नहीं हमारा यहाँ। अपनी मुस्कुराहटों के पीछे गम का समंदर रखते हैं। किस हाल में है किसी को पता ना चले, दिखावे के लिए खुशनुमा मंजर रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल राइट, 100% सही बोल रहे हैं। सच्चाई लेकिन छुपती कहाँ भैया, जरूर बयां हो जाती है। कितना हम छुपाते हैं। लाइव काहे नहीं चालू किए सोनू भैया आप? खाना खाए? मरना तो सबको है, पर काम करो कुछ ऐसा कि नाम हो जाए। फिर चाहे उसके बाद मेरी जिंदगी क्यों ना शमशान हो। ऐसा नहीं बोलो भाई। हाँ, लाइव नहीं चालू करोगे क्या? लाइव नहीं चलाओगे सोनू भैया? नाम कमाने के चक्कर में नाम खराब मत कर लेना। नहीं, क्यों? नहीं चलाओगे तो सो जाओ, आपकी नींद नहीं पूरी होती है। नहीं चलाओगे तो सो जाओ। और बताओ रवि भैया, खाने में क्या क्या होती है? हमको भी नींद नहीं आती। नींद कब आएगी? नींद क्यों नहीं आ रही है? रवि भैया आप किधर छुप जाती है? भैया हैं भैया जी। भैया भी हैं भैया जी, बोलो। यही हूँ भाई। और कैसे हो आप? सोनू भैया रवि भैया पूछ रहे हैं।
हम तो अभी खाना खाकर लेटती कहाँ है भैया, नाचना चाहिए ना थोड़ा सा। आपका खाना होती कि नहीं होती है? हम ठीक होती, ओके सोनू भाई, बच्चे हैं। कैसे हैं? मस्त हैं हम भी। मस्त ही रहना चाहिए भाई। कितने बच्चे हैं रवि? अच्छा। आपने तो कभी बताया ही नहीं। पागल भाई। रवि भैया मजाक उड़ा रहे हो? रवि भैया ने आपके बच्चों को पूछा है, अपने बच्चे थोड़ी बताए हैं। 4 हैं भाई। 4 हैं। अच्छा भैया। बच्चे किधर रहते हैं? 4 बच्चे हैं भैया तो। कभी तो दिखाया नहीं है आपने। मुझे लगा बोल रहे हैं बच्चे हैं। अच्छा भैया। सॉरी भैया जी। वही जो 2 आपके हैं वही 2 मेरे भी हैं, तो हुए ना 4। बिल्कुल राइट भैया, बिल्कुल। खाना खा लो रवि भैया। सॉरी। बात कर रहे हो आप? सॉरी किस लिए? कैसी बात कर रहे हो आप? सॉरी किस लिए? खाना खा लो रवि भैया। रवि भैया खाना खा लो। दीदी इच्छा नहीं है अभी बिल्कुल। ऐसे कैसे दवाई खा लोगे भैया?
दवा खा लिया हूँ दीदी जी। बिना खाए दवा खा लिए हो? बिना खाना खाए? ब्लड चेकअप कराए हैं कि नहीं? ठीक है सब लोग भाई। रवि भैया आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है ना? भाई साहब काफी ठीक हूँ भाई। आप भी झूठ बोलना सीख गए रवि भैया। आपका भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है लेकिन कभी बताए नहीं। आप आराम करो भाई। कल से अभी तक सोया नहीं हूँ तो थोड़ा मूड सही नहीं लग रहा है बस। देखो मैं ठीक हूँ दीदी जी। हंसने से ऐसे तो सब हंस लेते हैं भैया, हम नहीं हंसते हैं सबके सामने? हम भी हंसते हैं। आप सबसे पहले सो जाओ रवि भैया। आप सबसे पहले सो जाओ। नींद नहीं पूरी होती है ना तो इससे भी प्रॉब्लम होती है। सो जाओ रवि भैया, प्लीज सो जाओ। आप परेशान हो जाओगे, सो जाओ प्लीज भैया। कोशिश करो थोड़ा सा खा के तब। ओके दीदी मैं चलता हूँ। ओके भैया। गुड नाइट भैया, धमरात्रि, सो जाओ। बाय बाय सभी को, बाय बाय भैया, बाय बाय सभी भैया, बाय बाय। अपना ख्याल रखना। मैं हो सकता है कल फोन करूंगी। बाय बाय भैया, बाय बाय रवि भैया। अपना ख्याल भी रखा करो हम लोगों के साथ साथ। सोनू भाई हम सोती है आपसे, हम अगले एपिसोड में मिलते हैं। आप भी सो जाओ, आपको जल्दी उठना है। जल्दी नहीं उठना है सोनू भैया, कल तो 10 बजे उठेंगे। कल सीधे 10 बजे उठेंगे। कल सोना है, कल संडे है ना। अगले एपिसोड में हम आपका इंतजार करती। हाँ दीदी आराम करो आप। मैं आज दिन में थोड़ा सा सो ली थी भैया।
कभी-कभी सच में कोई बात जब माइंड में आ जाती है, नींद भी नहीं आती है। अब ऐसे अपने आप आ जाएगी 10 साढ़े 10 बजे। आप भी सो सोनू भैया, आप भी सो। हम करो पैदल यात्रा करके आपसे एपिसोड पैदल यात्रा करके एपिसोड में मिलती है। अच्छा भैया, इतना परिश्रम करोगे? हमको तो नींद नहीं आती। नींद नहीं आती तो बैठ के भजन गावा। आज भजन गाय के भाभी के सुनाओ। हमको नींद नहीं आती। यह भी नहीं आती तो डांस करा। नींद नहीं आती, नींद तो लगती सुन। हाँ मतलब नींद आती नहीं तो नींद लगती तो है। अच्छा भैया। वो भी नहीं आती। फिर आती का? फिर आती का सोनू भैया, जो आती वही करती आप। नींद आती नहीं, नींद तो लगती सुलुलुलु। इमोजी भेजा करो तो मतलब भी बताया करो, हमको समझ में नहीं आता है। हमें पता चलती कि आप नींद से पैसा बना लेते, इसलिए दोबारा नहीं आती। अच्छा।
आप कर्जदार होते। इसका मतलब घूर के देखना। हाँ, ये 1-2 इमोजी तो समझ में आ जाती है भैया, पर ये ऐसी जो होती है ना बहुत छोटी-छोटी, वो मेरे समझ में नहीं आती। ये तो देखने से ही लग जाना कि घूर के देख रहे। हाँ, अच्छा इसका भी मतलब वही होता है। इसका मतलब हँसते-हँसते नाक निकल। रवि भैया क्या-क्या। इसका मतलब है कि सुन नहीं रहा हूँ, हेडफ़ोन लगाया हूँ। यही ना सोनू भैया, इसका मतलब है सुनाई नहीं दे रहा, तेज से बोलो। हम्म। इसका मतलब है नाक पोंछना। किसका नाक पोंछने जा रहे हो? किसका नाक पोंछने जा रहे हो बताओ? नाक दबाकर बाहर छींक कर आना रे राम। सच्ची बता रहे हो रवि भैया, सिर्फ मजाक में बता रहे हो? कहीं हम ऐसा सच में ले ले तो? इसका मतलब सर फोड़ना। अच्छा, ये तो नाक पोछे वाला सर फोड़ा वाला अक्के जैसी लगा थी मुझे। इसका मतलब कोई मेरी बात ना सुने तो? अच्छा, तो दांत पीस कर देखना। इसका तो आता है भैया, इसका समझ में आता है।
या ना अच्छा, या नाक थोड़ा ऊपर लगा दे ऐसा हो गया। अच्छा सोनू भैया। इसका मतलब कांटे पारा होना। अच्छा भैया। आप लोग आज इमोजी समझाओ हमको। हम हंसने वाली इमोजी की एक दो और इसमें से ऐसे जानते थे बस। टाटी फाड़ के देखना। अच्छा आपके यहाँ टाटी बोलते हैं भैया? हमारे यहाँ गांव में भी बोलते हैं। इसका मतलब कोई घर में अपनी टीवी ना देखने दे तो चुपके से टाटी फाड़ के देखना। टाटी फाड़ देना पर देखना जरूर। अच्छा अब आपके आसपास में सबको बताना पड़ेगा। टाटी ओटी में भी कांटा उटा लगा के रखना है। वैसे अब छप्पर टाटी बहुत कम ही जगह ऐसे हैं जो बन रहे हैं, अब कहीं मेरे हिसाब से नहीं है ना रवि भैया? अब कहीं देखने को नहीं मिलता है। छप्पर वाला वही पहले था, गाय भैंस जो भी रखते कोई जानवर तभी था। अब तो वो भी नहीं रखते। इसका मतलब है कि शादी विवाह में रेडियो देना ताकि एफएम पर समाचार सुन सके। अच्छा भैया। हम तो के टीवी समझत रहे। हम सोचत रहे कि टीवीए है।
इसका मतलब बहुत हो गया ज्ञान, निकल अब यहाँ से। अच्छा, इतना ज्यादा ज्ञान। इसका मतलब एक आंखें बंद करके देखो कि साफ दिख रहे हैं हम कि नहीं। तुम्हारी मोतियाबिंद। अच्छा, मोतियाबिंद किसको हो गई भैया? इसका मतलब है हमारे घर से बकरी हटा ले, नहीं तो बहुत मारेंगे आगे वहां तक तो। अच्छा, यहाँ लड़ाई वाला है क्या भैया? जंग फरिया जाएगी? अच्छा, इमोजियो बहुत अलग अलग मतलब है, हमारे समझ से बाहर है। इसका मतलब है पुराने बर्तन, टूटा फूटा बर्तन बेच लो। सही कहा तो भैया कि झूठ है ही बताओ? ये हंसावे के माले कहा थे। ये तो बंदर उंदर पता नहीं का खिलौना उलौना कार्य है। ओ मम्मी। इसका मतलब है लड़ाई करोगे हमसे, देख लेंगे तुमको हम। अच्छा भैया, हम तो ये तो समझे ना पावत रहे, सोनू भैया भेजत रहे तो। और का मतलब कल बताएंगे याद करके। ओके मेरे भैया, ओके। आप खाना खा लो थोड़ा सा भैया, मेरे कहने पे थोड़ा सा खाना खा के आप सो जाओ। आप खा लेना जरूर अभी भैया, थोड़ा सा भी खा लेना। और अपना ख्याल रखना भैया।
दीदी मैं छेना खाने जा रहा हूँ, आ जाओ जल्दी से। छेना क्या खाएं भैया, दांत दर्द हो रहा है ना। कोई चीज वैसी चीज खा रहे हैं ना, दांत में लग रहा, पता नहीं क्यों। पानी पी रही हूँ तब भी लग रहा है। मीठा चीज कुछ खा रही हूँ तब भी लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो, मीठा तो मेरा फेवरेट है। फेवरेट है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। सबसे ज्यादा तीखा फेवरेट है, और खट्टा अचार। खाना भी खा लो। मिठाइये खाओगे, खाना भी खा लो भैया थोड़ा। बचा के रख देना हमारे लिए, कल भेज देना। घर में तो हम अपना हिस्सा सबसे पहले लगाते हैं, बच्चों का बाद में। अरे मेरे भैया लगेगा ही नहीं, फिर जिंदगी भर वैसा ही रह जाऊंगी। जो भी 100 पीस बचा है उसको रहने दो। का पता चले बाहर निकाल दे, फिर वो लगे भी ना, वैसे ही रह जाए हम। दीदी जब आप खाना खा ही रहोगे ना, तो मुस्कुराहट जैसी स्टाइल आएगी आपके चेहरे से। अच्छा भैया। अच्छा, आप यही चाहते हो ना कि हमारा दांत जो भी है सब टूट जाए। हम्म। वैसे भी दीदी कोई काम का नहीं, आपके दांत मीट मछली कुछ खाते नहीं हैं आप। मतलब भैया मीट मछली खाए तो दांत काम के हैं, नहीं तो नहीं। अरे मेरे भैया, बाय 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 भैया, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट भैया, बाय बाय, धर्मरात्रि। अपना ख्याल रखना। आप हमको हंसा के तभी गए हो। कहावत सही है, रुलाते तो सब है, हंसाना सबके बस की बात नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू दिल से। अच्छा, आप छुप के देख रहे थे? हम तो सोचे तो बोल रहे थे नींद नहीं आती है, तो सो गए कैसे? सो जाओ सो जाओ सोनू भैया, छुप के देखो, नहीं सो जाओ।
ऐसे दांत बाहर हो जाएंगे आपके दीदी जी। एक दिन ना तो एक दिन होना ही है भैया, बट अभी नहीं। अभी नहीं भैया। टाटी फाड़ टाटी फाड़ के देख रहे हो? अच्छा, टाटी मत फाड़ के देखो। टाटी फाड़ के नहीं देखो, सो जाओ। सोनू भैया, ऐसे ना देखा, नहीं वापस बता देवे कि टटिया से चुपके से देख रहे थे सोनू भैया टीवी। टीवी देख रहे थे। अच्छा, कुछ बचपन की याद नहीं आ रही है रवि भैया? पहले जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जब रहती थी, या महापुराण, या ये का आता था शक्तिमान, पहले तो सब लोग यही देखते थे भैया, है ना? जहां पे लग जाए, जब चार्ज ना, लाइट ना रहे, तो चंदा लगाओ, बैटरी लाओ, पर भाग छूटने ना पाए, देखना है। और सब लोग गांव के ऐसा इकट्ठा हो जाए जिसके घर एक के घर लग जाए, हाथ तर ऊपर खड़ा हो, कोई बैठे देखे। दादा से बताएं, बता देंगे, हाँ। दादा से बता देंगे। सोनू भैया सुन ला। दरवाजे बंद कर ले। जब टाटी रही तो दरवाजा कैसे बंद हुई? टाटी में कौन सा दरवाजा लगाए हो सोनू भैया? लोहे वाला कि लकड़ी वाला कि प्लास्टिक के? बताओ जरा। कौन सा दरवाजा लगे है? जब अपने घरे लाई तब अच्छा, जब अपने घरे।
पैसा मिलावे के नाही टीवी देखने के पहले। हाँ, पैसा ना मिलावे के टीवी देखले से पहले। पहले ऐसा नहीं होता था रवि भैया, पहले ये होता था पैसा लो बैटरी लाओ, टीवी चलनी चाहिए। पहले के समय रहे जब, पहले का भी तो सन 2002 की बात बता रहे हैं। सन 2002 में भी ऐसा था, सन 2000 में भी ऐसा था कि जब उस टाइम में किसी को टीबी उबी मिल जाती थी ना, तो बहुत नाम होता था, अरे फला की घर में शादी भाई टीबी मिली है। अब तो टीबी का कहीं नाम है निशान नहीं है। मैं सबसे आगे बैठता था और झगड़ा करता था सबसे। अच्छा ऐसा होता था ना सोनू भैया, सही बात है ना, ऐसा होता था। मैं तो सोचती हूँ सिर्फ मेरे यहाँ ऐसा होता था, और लगभग मेरे सोच से कि उस टाइम पे सब जगह ऐसे ही होता था। हमारे भैया की भी शादी हुई थी सन 2000 में। उस टाइम में टीवी मिली थी उनको, सन 2000। उस टाइम पे भी ऐसे तब उतनी ज्यादा नहीं, किसी के कहीं किसी के घर होती थी, नहीं इतनी होती थी। पैरा का आदमी बनकर सबसे ऊपर फेंकता था। अच्छा, सोनू भाई हमारे यहाँ जिसके घर में रंगीन टीवी रहती थी उसके घर के बच्चे अंदर नहीं घुसने देते, दरवाजा भगा। अच्छा, अचानक हमारी गली तेरा मिल रहा था तो पटक पटक के मारते थे। सच्ची भैया, पहले का तो कुछ ऐसा अलग सच में। पहले तो स्कूल जाओ तो भी लड़ाई होके आते थे घर पे, किसी से बताते भी नहीं थे कोई। हमको जो देखने नहीं देता तो जाकर तार हिला देता था। अच्छा, इतनी बड़ी दुश्मनी। तार हिला देता था ताकि एंटीना ना पकड़े ना। अच्छा, तब छतरी वाला एंटीना भी नहीं होता था। वो एंटीना कैसा, वो पूरा उसका ध्यान नहीं आ रहा है। वो पता नहीं कैसे दूसरे हिसाब से होता था।
भाई कभी-कभी तो ऐसा होता था दीवार में चिपक के आवाज़ सुनते ठीक मिथुन फटाफट के मार रहा है गुंडा को। अच्छा। अच्छा बचपना कुछ अलग ही रहता था। शादी-ब्याह में बारात निकले, पैसा छिटाए, कितना लोग एक-दूसरे के ऊपर कूद जाए। टीवी देखने के चक्कर में ऐसे हो जाए, है ना? कंचक खेले वो, उसके लिए ऐसा हो जाए। पहले का समय कुछ आपके बच्चे तो ज़िम्मेवारियों में शुरू से बँध जा रहे हैं। हमको तो बोलते हैं उसको अंदर बुला ले, नहीं तो जाकर तार ही हिलाएगा। अच्छा इतना खौफ था आपका? मतलब इतना खौफ था, अंदर बुला लो नहीं जाके तार हिला देंगे। अच्छा, इतना खौफ था भाई। और हम भी नालायक रहते थे। धीरे-धीरे सरकते-सरकते के पहुँच ही जाते थे। अरे हमें सरकते-सरकते पहुँच ही जाते थे। रवि भैया बताओ ना, एक बार हम लोग बैंक पे गए थे, हमारी बुआ की लड़की थी पंजाब में। वो ना छोटी थी, अब क्या भीड़ इतनी ज्यादा थी, पूछो मत। वो क्या करे, जितने आदमी औरत खड़े थे सबके टांगों के बीच से एकदम लोग डांटे उसको, कहाँ जा रहे हो, कह रहे हम छोटी सी हम देख ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे करते करते आगे पहुंच गए। फिर वहां जाके तब बोले कि हमारी मम्मी छोटी है, पीछे दिख नहीं रही है, उसको लोग दबा दे रहे हैं। फिर तब वहां से पैसे वैसे उसके चक्कर में किसी तरीके से मिला,
नहीं तो लाइन में ही रह जाती, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अच्छा, कुछ समय ही अलग एक हो जाता है। हुँ। बूढ़े तो हमको देखकर जलते थे जब टीवी देखने उनके घर पहुँचते, तो कहते थे कहाँ जा रहे कहाँ जा रहे हो तुम भी उनकी तरह देखते थे। नाक पूछते थे फिर दूसरी तरफ देखने लगते थे। फिर थोड़ी बात दूर अच्छा नाक कहाँ पहुँचते थे? रवि भैया सो जाओ, ज्यादा मत हंसो। बास्केट में और कहाँ दीदी, उस समय घर वाले तौलिया खरीद कर तो देते नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भैया। शर्ट वगैरह जो था बाजू वाजू कलर हो जाती थी। सही बात है, अभी भी बच्चे घसीट लेते हैं गांव में देखो। तब का समय तो कुछ अलग था, पर अब के तो समय में बहुत परिवर्तन है। लेकिन बहुत गार्जियन अभी भी नहीं उस चीज को, बच्चों को उतना केयर नहीं कर पाते हैं। बच्चे जहाँ देखो तहाँ घसीट लेते हैं अभी भी।
यह तो मेरी टेंशन में बुढ़ा मर गया है, सिर्फ हम तो टीवी ना देखने के लिए बोलते बोलते। अच्छा भैया। हम लोगों का भी अभी हमारे जब हमारे क्या शादी बात, एक सीरियल जब आता था, अगले जन्म में बिटिया ही की जो, कितना फेवरेट सीरियल सबका बन गया था। हम लोग भी जिस दिन लाइट ना आए ना, शादी के बाद, अपने ससुराल में थी, मम्मी में दिल्ली आ गई थी, लाइट ना आए तो हम लोग सोचे कैसे देखें कैसे देखें। एक आदत बन जाती है। ओके दीदी जी, बाय 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 बाय, रवि भैया जी गुड नाइट, धम रात्रि, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय भैया।
गुड मॉर्निंग संध्या। संध्या जी गुड मॉर्निंग। संध्या दिनेश। बिस्किट दे दे मम्मी। मैंने दे दिया मम्मी खा। नहीं बेटा मुझे बिस्किट नहीं खानी है। ठीक है छोटू ये लो तुम ले लो वापस। एक तो ले लो। मेरे बिस्किट तेरे पास
तो चिन्ह में चिल्लाया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक